in the country that we live in the setup that we live in a democracy. And in a democracy, it is defined in a way, it is designed in a way where people living in the country should have a space to share what they think, to have a say in what gets decided for them, to have an opinion about things that happen in their life or impact them directly or indirectly. The problem that we're solving for is that this space currently is missing. Samarthya primarily works to improve community participation in public education. So, in the context of government schools, there are certain structures and practices that are there in place by law, which are not sort of happening in reality. And at Samarthya, we are trying to ensure that the structures that are there, which allow for community, for parents to participate in a public school, those structures are actually activated, and that platform is given to parents to truly participate in governing a public school. SMC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੋਲਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਇਨਕਲਕੇਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਆਰ ਮੇਜਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। SMC मेंबर बन गया, इसका मतलब आपका ऊपर में एक स्कूल का जिम्मेदारी है और वो स्कूल आपका गांव का है और किसी का नहीं। अपना घर आपको ही देखना है। आपका घर में मेहमान आ सकता है, वो मेहमान आज आया कल निकल जाएगा। उसी तरह से कोई भी टीचर आएगा, ट्रांसफ़र हो गया आएगा, अपॉइंटमेंट हो गया आएगा, 2 साल 5 10 साल के बाद में वो ट्रांसफर करने के निकल जाएगा, लेकिन आपका घर आपका रहेगा। What we do is that we support the state department in various things. We work with them on building programs. We work with them on running, not just building, but also like designing, implementing programs, which in turn would lead to increase parent participation. So our focus while working with any government is twofold. We work on a will gap and a skill gap. The skill gap is basically the gap of knowledge, of not knowing what to do, how to do. The will gap is not being sure that why is something needs to be done. We try to bridge the skill gap by working with the stakeholders to contextually identify problems or the gaps that they identify in the system, or the kind of support that they need, and then providing them with that support in a manner that's suitable to them. And in terms of the will gap, the idea is that if we work on the skill gap enough number of times, and if we identify a few champions in the system who can champion the cause, who can champion the work, we'd be able to sort of motivate others to take this up as well.
हर 2 साल बाद एसएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इस साल का गठन जो है एक नई प्रक्रिया के अकॉर्डिंग करवाया गया है। इस प्रक्रिया के तहत हमने विद्यालय प्रबंधन समिति में जो बच्चे स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स को, ABRCs को, BRPs को बुलाया, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई, उनके लिए सोशल अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करवाए, बुनियादी करवाई गई। मंदिर से मंदिर, डोर से डोर जाकर, घर से घर जाकर हर बच्चे ने, हर पेरेंट्स ने, हर टीचर ने एक दूसरे को बताया कि स्कूल में एक अच्छा सा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है जिसका नाम सांझी सभा है। सामर्थ्य संस्था के कुछ सदस्य आए थे स्कूल में, उन्होंने हमारे बच्चों को भी मीटिंग में शामिल किया, उनकी समस्या पूछी। तो उस मीटिंग में सबसे बड़ी समस्या ये आई वर्के कि 12वीं के बाद हमारी लड़कियां बाहर नहीं जा पाती स्कूल, मतलब कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या थी ट्रांसपोर्टेशन की। तो हमने सामर्थ्य संस्था के मार्गदर्शन में इस समस्या को उठाया और फिर समाधान करवाया। तो पहली बार लास्ट ईयर 2022 में इस हमारे गांव से 10 लड़कियों का एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज घरौंडा में। तो एसएमसी की जब मैं मेंबर बनी तो मुझे ये काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई कि जैसे हमारे मिड डे मील है स्कूल में, तो उसमें अगर खाना हमें चेक करना होता था कि खाना कैसा बन रहा है, वो जो भी सदस्य हैं स्कूल में काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, हमारे अध्यापक हैं तो वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो हम उनके बारे में भी बोल सकते हैं, हम एक स्टैंड ले सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा लगा और हमने काफ़ी सहयोग भी दिया अपने स्कूल के मैनेजमेंट के लिए। The work we are trying to do at Samarthya is one of ensuring that no one, irrespective of their economic status, their caste, their religion, no one is a victim of their circumstance. We're trying to ensure that there are avenues for people from the most vulnerable sections of the community to participate in how their lives shape up. So there's an opportunity for them to shape the future of their children and their own lives as well.